हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट का रिव्यू करने वाले हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ, which is situated in the heart of Haryana, the city known as Gurugram with all multinational companies and other facilities. Yes, today we are talking about Indian Institute of Learning and Management and their law course. So आज हम एक 360 रिव्यू एक पूरा करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाउ वास्ट इज हाउ बिग इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम का फिल्ट्रेशन क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, एक्रेडिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ILM स्टार्ट हुआ था 1993 में, सो ऑलमोस्ट 25 years ऑफ लेगेसी इन एजुकेशन. They have entered in education with a lot of programs and they have introduced law as one of their main programs as far as ILM is concerned. ILM की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में आता है इंडिया के. So today we are specially focusing on their law program. So on UG level they have BA and LLB and BBA and LLB. On masters level they have LLM जो कि 1 साल का प्रोग्राम है. BBA LLB and BA LLB 5 years का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आप BA भी कवर करेंगे और अपना लॉ भी कवर करेंगे. What is the eligibility? The students who have secured 50% in their 12th, from CBSE or other equivalent boards are eligible to apply. Admission process बहुत simple है. First and foremost thing, आपको एक ILM का law college का application form fill करना होगा, which is somewhere around 1000 rupees. उसके बाद you have to undergo a written test, a selection procedure उनका एक written test followed by an interview. Once you clear both the rounds, you are eligible to take admissions. BBA LLB again it's a 5-year integrated program जिसमें आप BBA plus अपना लॉ का डिग्री कवर करेंगे. एलिजिबिलिटी सिलेक्शन प्रोसेस दोनों प्रोग्राम्स के सेम है. Students who have applied for CLAT who think that after CLAT they wanted to apply with ILM, they can still, but my suggestions to them, you never know CLAT कितना डिले होगा. So right now ILM is conducting their selection process. You can very well fill their application form and be eligible to sit in their selection process. Accreditations की बात करेंगे, so they have all major accreditations. सबसे important accreditation है एक law college के लिए Bar Council of India, BCA approved. Yes, of course they are BCA approved. Other accreditations are South Asian Quality Accreditation, National Board of Accreditation and Association of Indian University. For the other programs, they are AICTE and UGC approved because ILM itself is an university. They have lot of scholarships, but सबसे पहले हम फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे. ILM का थोड़ा सा मुझे ये डीमेरिट लगता है, बट इसे मैं डीमेरिट भी नहीं बोलूँगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है. With obvious factors because ये गुड़गांव के सेंटर में लोकेटेड है, right near the metro stations. So of course, if we talk about the cost of the program is 15 lakhs, क्योंकि infrastructure cost बहुत expensive है and other factors make that course add on हो जाता है cost. तो इसलिए इसका जो total program का fees है that is 15 lakhs which is 3 lakhs a year. But अगर हम scholarships की बात करेंगे, so ILM is ready to give a deserving candidate a lot of scholarships, different means of scholarships. सबसे पहले तो merit cum scholarship है, हरियाणा डोमिसाइल की स्कॉलरशिप है कोरोना वॉरियर्स के लिए, बिकॉज लास्ट ईयर से हम लोग काफ़ी डिफिकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं. सो ILM हैज इंट्रोड्यूस्ड कोरोना वॉरियर्स स्कॉलरशिप. आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट स्टूडेंट का एक अचीवमेंट रहा है थ्रू आउट academics, थ्रू आउट देयर ग्रेजुएशन, सो डेफिनेटली दे आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप. पीपल आर कमिंग फ्रॉम डिफेंस पर्सनल बैकग्राउंड, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स. सो अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो एक डिजर्विंग कैंडिडेट जो अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, who has a right I would say intention towards the future, I'm sure can get good kind of scholarships, good percentage of scholarships which will definitely ease in the total amount. अगर हम इनकी LLM की बात करेंगे तो ये 1 year का प्रोग्राम है जिसमें 3 तरह की scholarships they are offering: corporate and commercial law, criminal and security law and alternate dispute resolution system. ये 3 तरह की स्पेशलाइजेशन है. तो एक LLM का स्टूडेंट जिसने BA LLB कंप्लीट कर ली होगी, they are eligible for LLM with these kind of specializations, can choose any of the electives out of the 3 electives available. 1,25,000 square feet पे ये कैंपस बना है in the heart of Haryana, Gurugram.
with all modern facilities and equipments जो कि एक law student को चाहिए. I don't want to miss here one of the finest moot courts they have. I'm sure a law student will understand a moot court. Moot court is nothing but a physical structure of a blueprint of a court. The moment you have seen, या बहुत सारी movies में courts देखते हैं, वैसे ही court इन्होंने structure design करा हुआ है अपने कैंपस में, so that you'll have a practical experience. आप वो atmosphere face एक experience कर पाओ, being a lawyer, being an advocate, the arguments, judges there, the witnesses is coming. So that kind of atmosphere, one of the finest campuses of Delhi NCR as far as law is concerned. अगर मैं all over India में NLUs के बाद किसी को recommend करूँगा तो ILM कुछ colleges में से एक ज़रूर होगा, ठीक है? Students are very much satisfied. People are getting good sort of internships because this is a 5-year long program. जिसमें internships बहुत important है, तो इनकी internships की अगर आप एक history देखेंगे तो different legal houses, corporate companies, even courts में, you know, they are sending their students for internships. So the maximum exposure you can get is through internships. Rest we have covered. Fee structures, accreditations हमने cover कर ली हैं. प्रोग्राम का क्या एक इंटरफेस है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है. सो व्हाट आई फील, अभी क्लैट में टाइम है माय डियर लॉ एस्पिरेंट्स. सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी ऑप्शन. प्लान ए ऑप्शन हैज टू बी क्लैट, हैज टू बी NLUs or state universities. Undoubtedly we are with you in this kind of discussion. However, plan B option should be created. So this is our suggestion. Right now you can appear for such entrance which ILM is conducting. Take admissions, create a backup option, and then keep preparing for CLAT. So this is what I have to discuss with you today as far as ILM law is concerned. Rest we have already created ILM Law School microsite on dialeducation.com website. You can go and you can research in detail. And if there is any other questions you think you want an answer from me or you want my suggestion, always you can put in the dialogue option or the comment section. Me and my team will definitely more than happy to assist you. Be safe, keep inside, and let the career begin. Thank you so much. All the best.